हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video of class plus 1 we have discussed about the types of friction. There are three types of friction, that is static friction, limiting friction and kinetic friction. Now in today's video we will discuss about the law of limiting friction. There are four laws of limiting friction. On what factors the friction depends? The force of friction depends, then what is its value, then what is its direction. This gives law of friction. There are four laws of friction. First is force of limiting friction does not depend upon area. For example, let us consider two surfaces. First is of plastic, made up of plastic which have less density, and second one that is made up of iron of a same area. Same area. The force of limiting friction does not depend upon area until the normal reaction is constant. But in this case, normal reaction is not constant, as the weight of plastic, weight of the body made up of plastic, that is weight of the body made up of iron, as weight of iron is greater than weight of plastic, this implies normal reaction, that is given by R. Normal reaction of iron is greater than normal reaction of plastic. Means फोर्स किसके अंदर ज्यादा लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? आयरन के लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा. मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इन केस ऑफ आयरन बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज मोर. नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है. अगर नॉर्मल रिएक्शन दोनों का सेम है, तो बोथ आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड व्हिच हैव सेम मास, मेड अप ऑफ डिफरेंट एरियाज, मेड अप ऑफ बोथ बॉडीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बोथ हैव सेम मास, सेम weight. Weight of body 1, weight of body 2. If both are equal, then normal reaction will be equal, then force of friction is equal, first and second. Because normal reaction is same for both the body. If normal reaction is same, then force of friction, force of limiting friction is always same. But it does not depend upon area. It depends upon normal reaction. We discuss about in the fourth law. Second, the force of limiting friction does not depends upon, the force of limiting friction depends upon roughness and smoothness of the surface. Rough surface, the force of friction is more. Smooth surface, the force of friction is less, as we see in the daily life, daily practice. But by making the surface extra smooth, force of friction depends upon roughness. Rough surface, more friction. Smooth surface, less friction. But if the two surfaces are made extra smooth, then friction is always increases. Why? अगर दो surfaces को बहुत ज्यादा extra smooth बना दिया जाए, तो force of friction बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा? Because दो पार्टिकल है दोनों के, वो ज्यादा नजदीक आ जाएंगे. Irregularities की वजह से पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ पाते दो सरफेसेस के, इसलिए उसमें फोर्स ऑफ एडिशन कम होता है. पार्टिकल टच कम होंगे, पार्टिकल नजदीक कम होंगे, नजदीक होंगे तभी फोर्स ऑफ एडिशन. फोर्स ऑफ एडिशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट बॉडीज. वो डिफरेंट बॉडीज के पार्टिकल पास नजदीक नहीं है, दूर दूर है, फोर्स ऑफ एडिशन कम. फोर्स ऑफ एडिशन इरेगुलरिटीज की वजह से फोर्स ऑफ एडिशन कम होगा, दूर दूर होंगे. इरेगुलरिटीज बढ़ने से भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रफनेस बढ़ा दी, इरेगुलरिटीज बढ़ा दी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा. लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ बढ़ाने से भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाएंगे. पार्टिकल नजदीक आने की वजह से फोर्स ऑफ एडिशन बढ़ जाएगा, चिपक जाएंगे. देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट बॉडीज. तो पार्टिकल डिफरेंट बॉडीज है कि हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उनको ब्रेक करने के लिए. फोर्स ऑफ एडिशन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. Means roughness पे डिपेंड करेगी. rough surface more friction, smooth surface less friction. If the surface is extra smooth, then force of friction increases because of strong force of addition between the particles. Third law, the force of limiting friction always oppose the relative motion. हमेशा oppose करेगा relative motion को. There is always some loss of energy in the case of
friction as we see in the daily life, as we have studied in the earlier classes. Fourth, the force of limiting friction is directly proportional to, the most important, the force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction of the surface. Force of friction always directly proportional to the normal reaction. Normal reaction is the force applied by the surface normally. This surface, if we consider this is the surface, as we consider inclined plane, then this is the surface give the reaction, and normally that is the normal reaction. The force given by the surface normally to the body, that is the normal reaction. Weight of the body, that is vertically downwards always. The force of friction directly proportional to this normal reaction. And if we force of friction directly proportional to the normal reaction, और proportionality के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा, that is mu. F is equal to mu r. Mu is the coefficient of friction. The coefficient of friction tells about the friction. If coefficient of friction has large value, force of friction ज्यादा होगा. coefficient of friction की वैल्यू कम है, friction कम हो गया. सीधी सी बात है, mu की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि surfaces के बीच में force of friction कम है या ज्यादा है. That is the law of limiting friction. The most important was third law. The fourth law, F is equal to mu r. This implies mu is equal to F by r. That is force of friction. That is normal reaction. That is always force given by the surface normally. Means it has mu. Mu has no unit, no direction, no unit, no dimension. ना तो इसकी यूनिट होगी और ना इसका डायमेंशन. Because force upon force, same quantity among same quantity. Mu, coefficient of friction, it is a constant value between the two and depends upon the types of surfaces. Mu depends upon type of surfaces, roughness and smoothness. It is why the tires are made up of rubber and road are made up of concrete, because mu has a suitable value for tires and road. रोड को और टायर्स को रबड़ का बनाने की क्या जरूरत थी, रोड को कंक्रीट का बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होनी चाहिए. स्मॉल होगी, फ्रिक्शन कम हो गया, आसानी से रुक नहीं पाएंगे, आसानी से चल नहीं पाएंगे बॉडी. फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा. एक सूटेबल वैल्यू होनी चाहिए म्यू की. दैट इज व्हाई टायर्स आर मेड अप ऑफ रबड़ एंड रोड आर मेड अप ऑफ कंक्रीट. दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं. लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के आगे छोटा सा टॉपिक था, इसी से आगे एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. What is angle of friction? Let us consider a body of mass m. Consider a body of mass m placed on the rough horizontal surface. Rough horizontal surface क्या? Rough horizontal surface है. ये टेबल के ऊपर rough का मतलब फ्रिक्शन लगा हुआ है. Rough horizontal surface पे हम मास की बॉडी. Then force acting on the body, the weight of the body, that is vertically downwards, mg. The normal reaction given by the surface horizontal है, normal reaction ऊपर की तरफ. If this is the applied force, then this is the force of friction. ये friction. Friction always act at the point of contact. This is the force of friction. Then the angle of friction. It is the angle between. किसके बीच का एंगल होगा, देखो. नॉर्मल रिएक्शन एंड resultant of force of friction and normal reaction.
Angle of friction, it is the angle between force of friction and resultant of पैरेललोग्राम लॉ ऑफ इस लॉ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे. पैरेललोग्राम कंप्लीट करके फ्रॉम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट एडिशन, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and force of friction. Then angle of friction represented by theta. It is the angle between normal reaction, this is the normal reaction, and resultant of force of friction and normal reaction, resultant of force of friction and normal reaction. This is the angle theta. Now let us consider the points O, A, B, C. Then in triangle OBC, tan theta is equal. Find the tan theta in the right angle triangle OBC. Tan theta, that is perpendicular by base. This implies perpendicular. Theta के सामने perpendicular, that is BC divided by base. Base is that is BC. Theta के सामने theta के सामने perpendicular, 90 के सामने hypotenuse. This OC is the base. And this implies tan theta is equal to, what is the value of BC? BC, this is the value of BC, same as that of OA. That is equal to OA divided by OC. BC is same that of OA. Means OA is equal to F, force of friction, divided by OC. OC की तरफ कितना फोर्स लगा रखा है? Normal reaction R. And F by R, we have studied in the previous topic. F by R, that is equal to mu. Means tangent of angle of friction is always equal to coefficient of friction. Tangent of angle of friction always equal to coefficient of friction. This is the angle of friction. Angle between, definition इस diagram से note करेंगे. It is the angle between normal reaction and resultant of normal reaction and force of friction. Resultant of force of friction, normal reaction. This is the angle. This angle, not the this. This is the angle of friction, that is tangent of angle of friction is always equal to coefficient of friction. Thanks. Have a nice day.